It's time to take your medication. Thank you, Katie. I couldn't get along without you. My new caretaker, companion. And friend. Leonard? How long did you work for Mr. Wellesley? About 4.5 months. And you worked here too, Mr. Kettner? Just a couple weeks. We're married. We're broke. I'll find something. We made it this far, right? Apologies. Keep them out, Chuck. Our credit card machine's down. It's been down all day. कौन? सुनो ना. What? Mom, I'm fast asleep! You don't look like you're asleep. What are you doing here? I'm doing exactly what I said I'd do. I'm here to have sex with you. Guys, sophomore year is gonna be our year. You can feel it. But we're not. İşte bir zamanlar tıpkı senin yaptığın gibi ben de hayallerimin peşinden koşmaya karar verdim. En büyük hayalim I have a maid. Hoş geldiniz. İyi akşamlar, nasılsınız? Teşekkür ederim. Mutlu yıllar. sağ ol. İşim Umut. Ali Necat Bey. Hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba, Neslihan. Naz. Memnun oldum. Umut. Sevgili dostlarım, benim için kalabalık önünde bir şeyler söyleyebilmek gerçekten kolay değil. O yüzden merak etmeyin. Fazla uzun bir konuşma olmayacak. Uzun konuşmalar sıkar beni her şeyden önce. Beni tanıyanlar bilir. Doğum günü kutlamak gerçekten bana göre bir şey değil. Ama benim için bu gece özel ve önemli bir gece olacak. Senin oğlun olduğum için çok şanslıyım baba. Bu hayatta pek çok kimsenin sahip olamayacağı birçok şey verdin bana. Ama belki de öğrettiğin en değerli şey ne olursa olsun hayallerinden vazgeçmemek oldu. Kimsenin inanmadığı bir hayalin peşinden gece gündüz nasıl koştuğunu ve bugünkü durumuna getirdiğini senden az dinlemedim. Ben de kendi doğum günümde kendime bir hediye vermeye karar verdim. Bu güzel haberi sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Ali Necat! Benim de sana bir hediyem var. Doğum günün kutlu olsun.
Hadi oğlum kalkmamız lazım. Ya uyumak istiyorum bu. Ama anneciğim lütfen. Hadi işe geç kalıyorum ben. Hayır. O zaman benden günah gitti. Ben de gıdıklamaya başlarım. 1, 2, 2,5. Anne tamam kalkıyorum. Oo, aferin benim oğluma. Hadi. Hadi kalk güzel oğlum benim. Yüzünü yıka. Hadi hoppa. Çok uykum var. Niye her sabah ben de kalkmak zorundayım? Ne yapalım oğlum evde tek başına mı kalacaksın? Kalırım.
Hayatımı mahvettin. Are you afraid? Why would I be afraid? You can be honest with me. I'm nothing but a shadow of a man. I hope that was honest enough for you. Ready! Suppressing fire! We won't survive a direct hit from these! Chief! Prepare yourselves, officers. Tonight we go hunting. Leonard. Everybody's looking for a new sensation, and we're all expected to break expectations. I know it very well, and it ain't hard to tell. Everybody's looking for you. Say it again, Charlie. Sorry, Dwight, it was my alarm. Last time, I mean it. Katie! If you want to move up the bus, boy, you're going to have to be on time. You hear me? Everybody's looking for a new temptation, where they never satisfied generation. I knew it right away, watching you change shape. Here you go. Hey, Sleeping Beauty. Sorry. It's all right. Rough day? Yeah. What are you studying? Nothing. Just contemporary sociological theory and empirical corporate analysis. Sounds like fun. You know, when it comes to corporate empirical analysis, the jokes just kind of write themselves. That's what you'd think. Can I get you anything else? Adam. Honey. No. Your break's over. No. Yes. No. Come on. No. Dwight's gonna come looking for me. You gotta stop working nights. I know. That's all they've got. We just have to keep our heads above water until you finish school. It's not exactly what I had in mind when we got married. We made it this far, right? We just have to see it through. Once you graduate school, find a great job, I'll go back to grad school. And I can support you no matter what you deserve. You better. How did I get so lucky? I love you. I love you too. Okay, let's go. Dwight's gonna pitch a fit. All right. Out the door. I'm going. Come on, you. Where's the rest of it? There's no more money. Huh? You have all the money. Give me the goddamn money!
Shut up or you're dead! Don't mess with me! I'm gonna put a cap in your ass, old man! Do not mess with me! Yeah, but she's next! Please! We don't want no trouble. You already suffered. I'll do it right now! I'll do all of y'all! Right now! Nobody else gotta Give me the money, man! You don't have to hurt anybody else. Take the money. Hey, I told you, shut up! There is no more money. Shut up! I'm done with you, you hear me? I'm done with both of you! I'm begging you. You better pray, old man! I'll do it right now! You hear me? Do not mess with me, old man! A customer is being called a hero after preventing a robbery at the Smile Diner in South Chicago on Saturday night. While the Good Samaritan is uninjured, busboy Charles Sturley was shot and died at the scene. Raymond Gaskin has been charged and is now in custody at Chicago Memorial, recovering from wounds sustained in the fight. Smile Diner remains closed at this time. In other news, the culprits of the Diamond Heist... Nothing's what it seems, girl. You have the strength to rise. You shine like a beacon. The light pours from your eyes. The city is a jungle. Spirit cuts right through. You shine like a beacon. Let the love light rushing through. Morning, Leonard. On your feet. On your feet. I'll make a stand. Take on the fight and tell the world that you're invincible. No new message. On your feet, and I'll be standing next to you. Thank you, Katie. My father planted that tree on the day I was born 88 years ago. It's beautiful. When I was a boy, people would say my mother had a green thumb. Our garden was quite the showplace. Look at it now. I hired a fellow once to clean it up. This was a couple of years ago. Nice young man. Ethan something, I think. What happened to him? I don't know. He worked for a few weeks and then stopped coming. Never saw him again. Listen to me. I sound like some silly old man. No. And today's our anniversary. What? Yes, 4 months ago today, the agency sent you to my door. My new caretaker, companion, and friend. And friend. Come on. It's time to take your medication. They're gonna schedule the last round of interviews in a couple weeks. Couple of weeks. It's a big company. Gotta jump through a lot of hoops. But that kind of job, you know, they have their own way of doing things. I can't really push them. No, I know. I'm a little stressed right now. We got another call from the student loan people today. God, they never quit. Well, you stopped taking classes, so we have to start paying off the loans. Otherwise, they'll turn it over to a collection agency. All right, I know, yeah. I'm gonna call tomorrow. Great. And maybe you can call the credit card people while you're at it, too. And the rep with their health insurance. Okay, Katie, I get it. I'll figure something out, all right? Don't worry. I'm gonna get started on the dishes. Katie. Don't tell me not to worry. Sorry.
We're in serious trouble, Adam. We need to get some money coming in soon. I'll find something. You've been saying that for months. It doesn't do us any good for me to take some minimum wage job. That's why I quit school, so that I can find something that pays enough. We can start chipping away at our debt. I just need a little bit more time. We don't have any more time, Adam. Hey, let me help. It's fine. I've got it, Adam. Adam! I'll clean it up. Why don't you ever listen to me? Why did you go in there? I begged you, Adam. He could have killed you. I could have lost you. Can you imagine how that would have felt? Never holding you again, never hearing your voice. Nothing's right anymore. Babe, it's been 4 months. No, I'm sorry. I can't. Where are you going? Out. Who's there? Leonard. Oh, it's you. Katie, what are you doing out here? I thought you were asleep. I just came here to think. What are you doing with that? I thought I heard someone in the house again. Again? I hear them walking, and when I come down, they're always gone. There's no one in the house. Here. Are you all right? Why didn't you tell me you had troubles with money? Oh, it's not your problem. How much do you need? Leonard, no. We're friends, aren't we? We are. Well, then let me help you. I've got a little money set aside. I could never do that. A young couple starting out. The world is complicated enough. You shouldn't have to worry about money. Comes with the territory. But to be in love, maybe have a family one day, grow old together. These are wonderful things. Things I wanted when I was a young man. And it would be nice to think that in some small way, I made a difference to someone. Maybe to you and to your young man. He needs a job. I'll tell Leonard you're here. It'll be fine. Just talk to him. Okay. Lorazepam, 0.5 milligrams. Yes. I can pick it up after 5, probably. Thank you. Bye. Smell of the stockyards. How their children grew up and his wife. Hi, how you doing? Hi. So sorry to bother you. My name is Mickey Hayden. Real estate agent. Believe me, I know how this is gonna sound, okay? But I have this new client. Just got transferred to the city for work. He's got a big family, couple of dogs, the whole 9 yards. It's adorable. Anyway, he is looking for just the right home. And yesterday, he was driving through the neighborhood here, took one look at this amazing house. Oh, this house isn't for sale. Are you the owner? No, but trust me, you'd be wasting your time. He's lived here his entire life.
He's not going anywhere. My client is seriously motivated. Yeah, I don't know what to tell you. I'm sorry. But good luck. Oh, wait, look, could you do me a favor, Ms. Katie. Katie? If, by some crazy chance, he happens to change his mind, could you have him call me? That's not gonna happen, but sure. I appreciate that. Thank you. Yeah. You have a great day. You too. They want to make an offer? Sounds like it. They don't even care what the yard looks like. Well, I'm sure it'll look better after you start working it tomorrow. Place must be worth a fortune. Mm-hmm. Must be nice. Leonard. There you are. I've got your breakfast. Thank you, Katie. Of course. My parents used to play this. It's lovely. Sit with me a moment. Sure. Did you lock the back door? Yep. Good. So, when do I get the grand tour? See how the other half lives. The time will come. What about that Buick? It's like it's been parked there for a while. Does Leonard even drive it anymore? No, not since I've known him. I don't think he's driven in years. I was reading online about this medical school with a really great program in pediatric surgery. I'll send you the link. I love you. I love you too. Mr. Calvert. Hello, Katie. How are you today? I'm fine, thank you. We weren't expecting you. Oh, is this a good time? Sure, yeah. Come in. Leonard. Mr. Calvert is here from the agency. Good morning, Mr. Wellesley. Mr. Calvert, how nice to see you again. Come to check up on us? No, not at all. No, I just happened to be in the neighborhood, and I thought I'd drop in, say hello. Thought we might have a chat. Yeah. I'll get lunch started. Just call me if you need anything. Thank you, Katie. Yeah. Come back here. Oh, great. This is my favorite moment. What's for lunch? Yo, jumping in the big scary house? You can't be in here. There's a guy from the agency and he's doing a drop-in. Oh, well, you're doing a great job. Yeah, and he sees my husband working here. That won't look a little funny. Oh, you mean like maybe we're just messing around? Stop it. Okay.
Mr. Wellesley seems in good spirits. You two have gotten very close. Yeah, he's an interesting man. I like talking to him. You hired a gardener? Part-time. Yeah, it was Leonard's idea. Okay, well, I'll see you soon, Katie. Yeah. I can't say I especially care for our Mr. Calvin. Why not? He keeps asking all these questions, like he's trying to trip me up to make you look bad. He's just making sure I'm taking good care of you. That's all. Well, don't you worry. I told him I couldn't get along without you. Speaking of which... Thank you. Adam, look. Look. Whoa. Did you get a raise? Oh no. What? I said something to Leonard about us. What do you mean? I told him we're broke. Christ, Katie. It's a little personal, don't you think? I was upset. You were being a jerk, and I needed to talk to somebody. When was I being a jerk? That's not the point. Leonard wanted to help, so he offered to give us money. And you said yes? No, I asked him to give you a job instead. Well, maybe this check is for both of us. Like he added an extra zero. It's too much. What are you doing? I'm calling him. We can't keep this. He has to write us another check. By the time we drive back to the house, he writes another check. The bank will be closed. If we don't pay these bills by today, Katie, they're going to be kicking in our door. He's not answering. All right. Look, why don't we deposit the check? We cannot take this money. It's just for tonight. Pay the bills, talk to Leonard in the morning, you can write him a check for the difference. It's one night, Katie. What's Leonard's deal anyway? What's he doing in that big house all by himself? His parents passed away like 30 years ago. He's an only child, never married. No other family? No. It must be tough. Just being all alone like that? Yeah. He's such a good guy. Yeah. Love you. Yeah, love you too. Leonard? Leonard? Leonard?
What was he doing up here in the attic? I like to come up here sometimes. Listen to old records. What would he need to keep locked up here? Adam. We shouldn't. I'm just gonna look. Katie, come look. Who's she? I don't know. All these letters. Didn't you say that Leonard never married? We shouldn't do this. Yeah. Let's go. We need to call 911. Holy. What? That's a lot of money. You said he lived alone here for how many years? People can get a little eccentric. Start by putting some aside little by little before you know it. He doesn't have any family. He'll end up in a police locker somewhere. Government will take it. Why should we let it get caught up in the system like that? When it can actually do some real good. I mean, you said yourself how much he cared about you. He wanted to help. He did? Well, there you have it. Wait for him to help you. Help us. We would have to be careful. Yeah, we will. Adam, promise me. Promise. So how long did you work for Mr. Wellesley? About 4.5 months. And you lived here too? Leonard stayed here alone at night. That's how he wanted it. He could still get around okay. When was the last time you saw him? Yesterday afternoon, we left a little early to go to the bank around... Around 4:30. And you worked here too, Mr. Kettner? Just a couple weeks. I was doing some yard work for Leonard. We're married. I kind of got that. Yeah. So how was Mr. Wellesley doing? Was he having any health issues recently? No, he's been fine. I mean, he's 88, so he took a lot of medication, but he wouldn't have complained about it anyway. He wasn't like that. Well, I'm gonna need to get some contact information, next of kin. He doesn't have any family. No? No. I'm sorry for your loss. If you have any questions, just give me a call. Oh. Leonard once told me he wanted to be cremated. He, wanted his ashes spread in the garden. Let me get back to you. Okay. Thank you.
Where are you going? I have to talk to Mr. Calvern to get my name back on the list. What list? At the agency? For another position? Why? Because that's what I should do, now that I don't have a job. If you don't hear back about that job soon, maybe you should start looking again too. All right. I will. I'll see you later. Katie, I am so sorry. The two of you were so close. I can't imagine what a shock it was. If there's anything I can do. I would like to get another assignment as soon as possible. Oh, okay. Well, let's talk in my office. Okay. Hello? Speaking. Oh, hi, yeah. I agree. I thought the interview went very... I see. Yeah, no, I completely understand. Thank you for calling. Yeah, you too. Katie, I assumed you knew. I can't put you back to work. Not until the police finish their investigation. Investigation? Well, yes, when a client expires under the supervision of an employee, we cooperate with the authorities to be absolutely certain that there was... how would it look to a potential client if there was even any hint of... Wait, you think I had something to do with what happened to Leonard? God, no, of course not, no. This is... I'm sorry, Katie, this is company policy. There's nothing I can do until the police officially close their investigation. So how long is this gonna take? Yeah, I wish I knew. Hello? What were you thinking? You can't just come in here like this, like we still belong here. Excuse me. I'm bleeding right now. What do you want from me? We said we'd be careful, Adam. I asked you, and you promised me.
You promised! All right, okay. Look, I'm sorry. But if I wasn't here, I think that money would be gone. How could anyone know about the money? It's Leonard's. He kept it hidden. Why else would they be here, Katie? You didn't see who it was? No, they came up behind me. They couldn't have known you were here. They wouldn't have busted in like that. I heard the glass break, that's why I came down. The back door was already open. And you didn't think maybe that was a bad sign, that you should get out? No, I didn't have time to think. The next thing I know, I was waking up to the sound of my phone ringing. How could you do this, Adam? This never should have happened. You never should have been here. That's not the point. Then what is the point, Adam? Almost Tell me. 100 You're grand, always that's the trying to point. justify your... You counted it? I counted to 92,000. And there was more. Then she calls me to say how sorry she is that the hiring committee decided to go another way. Whatever the hell that means. I don't even know. They're all just such assholes. I'm just sick of being poor. Who was it, Adam? Who got in here? Maybe somebody that did some work on the house. Sometime before you started. Leonard talked about hiring a gardener, but that was a couple years ago. Well, whoever it was,
made it this far, right? नाम रोशन करने वालों की दास्तान जियो तो ऐसे प्रोग्राम के मेजबान होंगे जंग और जियो के टेक्निकल ऑफिसर डॉक्टर उमर सैफ। आज पहली किस्त में हमजा अली अब्बासी, एएसपी आमना बेग और आयशा चुंद्रीगर मेहमान होंगी। अपनी कामयाबियों के सफर से जियो न्यूज के नाजरीन को आगाह करें। डरना नहीं हमें लड़ना है, डरना नहीं हमें लड़ना है। सोशल डिस्टेंस रखना है, दिलों को जोड़े रखना है। इस वबा के पीछे हाथ धो के पड़ना है। डरना नहीं हमें लड़ना है, डरना नहीं हमें लड़ना है, डरना नहीं हमें लड़ना है, डरना नहीं लड़ना है, डरना नहीं हमें लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। डोंकी किंग भी आगाही के लिए मैदान में आ गया। डोंकी किंग के नए गाने की धूम, इस गाने को गुनगुनाएं, वीडियो बनाएं, जियो न्यूज को भेजें। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। मेहनत करो, देखो शोहरत नाम ये सब आता है मेहनत के बाद। जब तक मेहनत और थोड़ी किस्मत साथ देगी तो पर अपने आप पेड़ों पर लगेंगे। और आनजहानी ऋषि कपूर के नजदीक शोहरत हासिल करने और कामयाब होने का राज। अस्सलाम वालेकुम, जियो न्यूज के साथ मैं हूं अली अनीक सैयद। बुलेटिन के आगाज में अच्छी खबर दे दें। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। पेट्रोल की नई कीमत 15 रुपए कमी के बाद 81 रुपए 58 पैसे फी लीटर कर दी गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत 27 रुपए 15 पैसे कमी के बाद 80 रुपए 10 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। पेट्रोलियम लेवी बढ़ाकर सार्फिन को पूरा रिलीफ मुंतकिल नहीं किया गया। पंजाब और इस्लामाबाद में सीएनजी की कीमत में 12 रुपए 50 पैसे फी लीटर की कमी कर दी गई। मुल्क में एलपीजी की फी किलो कीमत में 22 रुपए का इजाफा भी कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 15 रुपए कमी के बाद 81 रुपए 58 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत 27 रुपए 15 पैसे कमी के बाद 80 रुपए 10 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। मिट्टी के तेल की कीमत 30 रुपए फी लीटर कम हो गई। नई कीमत 47 रुपए 44 पैसे हो गई। लाइट डीजल की कीमत में भी 15 रुपए फी लीटर कमी कर दी गई। नई कीमत 47 रुपए 51 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल पर पेट्रोलियम लेवी 4 रुपए 86 पैसे, डीजल पर फी लीटर पेट्रोलियम लेवी 5 रुपए 8 पैसे बढ़ाई गई, जबकि मिट्टी के तेल पर पेट्रोलियम लेवी 6 रुपए से बढ़ाकर 18 रुपए 2 पैसे की गई। पंजाब और इस्लामाबाद में सीएनजी की कीमत में 12 रुपए 50 पैसे फी किलो कमी कर दी गई। सदर ऑल पाकिस्तान सीएनजी एसोसिएशन गयास पराचा के मुताबिक सीएनजी की नई कीमत तकरीबन 72 रुपए फी किलो हो जाएगी, जबकि एलपीजी की फी किलो कीमत में 22 रुपए का इजाफा कर दिया गया। 1 किलो एलपीजी की कीमत 112 रुपए हो गई। मुल्क भर में 11.8 किलो के घरेलू सिलेंडर्स की नई कीमत 1322 रुपए मुकर्रर की गई है।
स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है। असद कैसर की बेटी और बेटे भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। उन्होंने पूरी कौम से दरख्वास्त की है कि वबा से बचने के लिए एहतियात की जाए। स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर के मुताबिक उन्हें 2-3 दिन से बुखार की अलामत थी। पहले भी टेस्ट कराया था जो मनफी आया था। जुमेरात को फिर टेस्ट कराया तो रिपोर्ट मुस्बत आई। उन्होंने खुद को घर में क्वारंटीन किया हुआ है। तबीयत बेहतर है। डॉक्टर्स ने उन्हें घर पर रहने और एहतियात की हिदायत की है। असद कैसर ने पूरी कौम से दुआ की दरख्वास्त की है और कहा है कि लोग वफा से बचने के लिए एहतियात करें। चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी और डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवी वाला ने स्पीकर कौमी असेंबली को टेलीफोन करके खैरियत दरियाफ्त की और जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की। सिंध में आज दोपहर 12 से दोपहर 3:30 बजे तक सख्त लॉकडाउन होगा। सूबाई हुकूमत का कहना है कि 12 से 3:30 बजे तक इस्तिस्ना हासिल कारोबार भी बंद रहेगा। 3 घंटों के दौरान अवाम की नकलो हरकत पर मुकम्मल पाबंदी होगी। गाड़ियों को इस दौरान सड़कों पर नहीं आने दिया जाएगा। सिंध हुकूमत ने शहरियों को हिदायत की है कि वो महकमा दाखिला के SOPs पर मुकम्मल तौर पर अमल करें। जब ये देखा कि कोरोना अमीरों और गरीबों में तमीज नहीं कर रहा तो अशराफिया ने घबराकर लॉकडाउन कर दिया। गरीब दिहाड़ीदारों और मेहनतकशों का न सोचा। 50 इंच के सीने वाला मोदी भी इतना डरपोक निकला कि पूरा मुल्क ही बंद कर दिया। ये कहना है वजीर आजम इमरान खान का। वजीर आजम इमरान खान ने एक बार फिर मुकम्मल लॉकडाउन की मुखालफत कर दी। कहा कि अगर कोरोना की बीमारी से सिर्फ गरीब शिकार होते तो कभी लॉकडाउन करने में इतनी तेजी न दिखाई जाती। लॉकडाउन अनाउंस कर दिया जी, जल्दी से फौरी लॉकडाउन अनाउंस कर दिया। सोचा ही नहीं कि वो बेचारा दिहाड़ीदार, उसका क्या बनेगा। एक एलीट ने फैसला कर लिया सारे मुल्क के लिए, सोचा नहीं किसी का। वजीर तालीम सईद वली ने कहा है कि वज़ीर आज़म कहते हैं कि लॉकडाउन इशराफिया ने जल्दी लगा दिया और दूसरी सांस में कहते हैं कि लॉकडाउन की वजह से पाकिस्तान में ASP आमना बेग और आयशा दीगर मेहमान होंगी। लॉकडाउन में कामयाबियों के सफर से जियो न्यूज के नाज़रीन को आगाह करें। 15 मई तक बढ़ा दी है। वज़ीर आज़म बताया कि इशराफिया कौन है। हुकूमत सिंध के तर्जुमान मौजूदा बहार का भी कहना था कि वज़ीर आज़म कंफ्यूजन का शिकार है या आवाम को कंफ्यूज करना चाहते हैं। तारीफ करते हैं तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान कहते हैं कि जी हमने तो 13 मार्च को लॉकडाउन कर दिया और उसकी वजह से आप देख सकते हैं कि मुस्बत असरात कोरोना वायरस के हमारे शहर। फिर जब वो ब्रीफिंग करते हैं किसी और मुल्क पे जाते हैं तो कहते हैं कि गरीब का ख्याल नहीं किया गया। लॉकडाउन के मामले पर मसाक और सिंध में खिलाफात बढ़ रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि कोरोना वबा कब तक चलेगी कुछ नहीं कह कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। डॉन्की किंग भी आगाही के लिए मैदान में आ गया। डॉन्की किंग के नए गाने की धूम, इस गाने को गुनगुनाएं, वीडियो बनाएं, जियो न्यूज को भेजें। कौंसल जनरल ईरान अहमद मोहम्मदी ने कोरोना से बीमार गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया है। अपने बयान में ईरानी कौंसल जनरल अहमद मोहम्मदी ने कहा है कि और कौन गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की सेहतयाबी के लिए गवर्नर सिंध जल्द सेहतयाब और आवाम की खिदमत जारी रखे। ईरानी कौंसल जनरल ने कहा है कि उन्हें यकीन है कि ईरान और पाकिस्तान की मजबूत कौमें और जहानी ऋषि कपूर के नजदीक शोहरत हासिल करने और कामयाब होने का राज। लाहौर के करंटीना मराकज में सहूलियात के फुकदान, जबकि एक 5 स्टार होटल में सहूलतों और टेस्ट रिपोर्ट्स की आदम दस्तयाबी पर करंटीना में रखे गए अच्छी खबर दे रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। पेट्रोल की नई कीमत 15 रुपए कमी के बाद 81 रुपए 58 पैसे फी लीटर कर दी गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत 27 रुपए 15 पैसे कमी के बाद 80 रुपए 10 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। पेट्रोलियम लेवी बढ़ाकर सार्फिन को पूरा रिलीज मुंतकिल नहीं किया गया। पंजाब और इस्लामाबाद में CNG की कीमत में 12 रुपए 50 पैसे फी लीटर की कमी कर दी गई। मुल्क में LPG की फी किलो कीमत में 22 रुपए का इजाफा भी कर दिया गया। पुराने हाल नहीं, ना कोई डॉक्टर आता है। पेट्रोल की नई कीमत 15 रुपए कमी के बाद 81 रुपए 58 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत 27 रुपए 15 पैसे कमी के बाद 80 रुपए 10 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। मिट्टी के तेल की कीमत 30 रुपए फी लीटर कम हो गई। नई कीमत 47 रुपए 44 पैसे हो गई। लाइट डीजल की कीमत में भी 15 रुपए फी लीटर कमी कर दी गई। नई कीमत 47 रुपए 51 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल पर पेट्रोलियम लेवी 4 रुपए 86 पैसे, डीजल पर फी लीटर पेट्रोलियम लेवी 5 रुपए 8 पैसे बढ़ाई गई, जबकि मिट्टी के तेल पर पेट्रोलियम लेवी 6 रुपए से बढ़ाकर 18 रुपए 2 पैसे की गई।
पंजाब और इस्लामाबाद में सीएनजी की कीमत में 12 रुपए 50 पैसे फी किलो कमी कर दी गई। सदर ऑल पाकिस्तान सीएनजी एसोसिएशन गयास पराचा के मुताबिक सीएनजी की नई कीमत तकरीबन 72 रुपए फी किलो हो जाएगी, जबकि एलपीजी की फी किलो कीमत में 22 रुपए का इजाफा कर दिया गया। 1 किलो एलपीजी की कीमत 112 रुपए हो गई। मुल्क भर में 11.8 किलो के घरेलू सिलेंडर्स की नई कीमत 1322 रुपए मुकर्रर की गई है। स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है। असद कैसर की बेटी और बेटे भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। उन्होंने पूरी कौम से दरख्वास्त की है कि वबा से बचने के लिए एहतियात की जाए। स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर के मुताबिक उन्हें 2-3 दिन से बुखार की अलामत थी। पहले भी टेस्ट कराया था जो मनफी आया था। जुमेरात को फिर टेस्ट कराया तो रिपोर्ट मुस्बत आई। उन्होंने खुद को घर में क्वारंटीन किया हुआ है, तबीयत बेहतर है। डॉक्टर्स ने उन्हें घर पर रहने और एहतियात की हिदायत की है। असद कैसर ने पूरी कौम से दुआ की दरख्वास्त की है और कहा है कि लोग वबा से बचने के लिए एहतियात करें। चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी और डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवी वाला ने स्पीकर कौमी असेंबली को टेलीफोन करके खैरियत दरियाफ्त की और जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की। सिंध में आज दोपहर 12 से दोपहर 3:30 बजे तक सख्त लॉकडाउन होगा। सूबाई हुकूमत का कहना है कि 12 से 3:30 बजे तक इस्तिस्ना हासिल कारोबार भी बंद रहेगा। 3 घंटों के दौरान अवाम की नकलो हरकत पर मुकम्मल पाबंदी होगी। गाड़ियों को इस दौरान सड़कों पर नहीं आने दिया जाएगा। सिंध हुकूमत ने शहरियों को हिदायत की है कि वो महकमा दाखिला के SOPs पर मुकम्मल तौर पर अमल करें। जब ये देखा कि कोरोना अमीरों और गरीबों में तमीज नहीं कर रहा तो अशराफिया ने घबराकर लॉकडाउन कर दिया। गरीब दिहाड़ीदारों और मेहनत कशों का न सोचा। 50 इंच के सीने वाला मोदी भी इतना डरपोक निकला कि पूरा मुल्क ही बंद कर दिया। ये कहना है वजीर आजम इमरान खान का। वजीर आजम इमरान खान ने एक बार फिर मुकम्मल लॉकडाउन की मुखालफत कर दी। कहा कि अगर कोरोना की बीमारी से सिर्फ गरीब शिकार होते तो कभी लॉकडाउन करने में इतनी तेजी न दिखाई जाती। लॉकडाउन अनाउंस कर दिया जी, जल्दी से फौरी लॉकडाउन अनाउंस कर दिया। सोचा ही नहीं कि वो बेचारा दिहाड़ीदार, उसका क्या बनेगा। एक एलीट ने फैसला कर लिया सारे मुल्क के लिए, सोचा नहीं किसी का। वजीर तालीम सईद वली ने कहा है जियो तो ऐसे प्रोग्राम के मेजबान होंगे जांगो जियो के टेक्निकल ऑफिसर डॉक्टर उस्मान सैफ। आज पहली किस्त में हमजा अली अब्बासी, ASP आमना बेग और आयशा चुंदरीगर मेहमान होंगी। अपने कामयाबियों के सफर से जियो न्यूज के नाज़रीन को आगाह करें। 15 मई तक बढ़ाई है। वजीर आजम बताया कि अशराफिया कौन है। उन्होंने सिंध तर्जुमान मौजूदा बहार का भी चेहरा था कि वजीर आजम कंफ्यूजन का शिकार है या आवाम को कंफ्यूज करना चाहते हैं। कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। डॉन्की किंग भी आगाही के लिए मैदान में आ गया। डॉन्की किंग के नए गाने की धूम, इस गाने को गुनगुनाएं, वीडियो बनाएं, जियो न्यूज को भेजें। हमारा नंबर आपके स्क्रीन। अहमद मोहम्मदी ने कोरोना से बीमार जबरदस्ती इस्लाम इस्राइल के लिए अनेक साजिशें अपने बयान में ईरानी कौंसल जनरल अहमद मोहम्मदी ने कहा है कि मेहनत करो। और कौन देखो शोहरत इस्माइल की सेहतयाबी के लिए ये सब आता है मेहनत के बाद। जब तक मेहनत तो थोड़ी किस्मत साथ देगी। ईरानी कौंसल जनरल ने कहा है कि उन्हें यकीन है कि अपने ईरान और आप जरूर पाकिस्तान लगेगी। और जहानी ऋषि कपूर के नजदीक शोहरत हासिल करने और कामयाब होने का राज। लाहौर के करंटीना मराकज में सहूलियात के फुकदान, जबकि एक 5 स्टार होटल में सहूलतों जियो न्यूज के साथ मैं हूं अली अनीक सैयद। बुलेटिन के आगाज में अच्छी खबर दे दें। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। पेट्रोल की नई कीमत 15 रुपए कमी के बाद 81 रुपए 58 पैसे फी लीटर कर दी गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत 27 रुपए 15 पैसे कमी के बाद 80 रुपए 10 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। पेट्रोलियम ने भी बढ़ाकर सार्फिन को पूरा मुंतकिल नहीं किया गया। पंजाब और इस्लामाबाद में CNG की कीमत में 12 रुपए 50 पैसे फी लीटर की कमी कर दी गई। मुल्क में LPG की फी किलो कीमत में 22 रुपए का इजाफा भी कर दिया गया। कोई पुरसाने हाल नहीं, ना कोई डॉक्टर आता है।
पेट्रोल की नई कीमत 15 रुपए कमी के बाद 81 रुपए 58 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत 27 रुपए 15 पैसे कमी के बाद 80 रुपए 10 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। मिट्टी के तेल की कीमत 30 रुपए फी लीटर कम हो गई। नई कीमत 47 रुपए 44 पैसे हो गई। लाइट डीजल की कीमत में भी 15 रुपए फी लीटर कमी कर दी गई। नई कीमत 47 रुपए 51 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल पर पेट्रोलियम लेवी 4 रुपए 86 पैसे, डीजल पर फी लीटर पेट्रोलियम लेवी 5 रुपए 8 पैसे बढ़ाई गई, जबकि मिट्टी के तेल पर पेट्रोलियम लेवी 6 रुपए से बढ़ाकर 18 रुपए 2 पैसे की गई। पंजाब और इस्लामाबाद में सीएनजी की कीमत में 12 रुपए 50 पैसे फी किलो कमी कर दी गई। सदर ऑल पाकिस्तान सीएनजी एसोसिएशन गयास पराचा के मुताबिक सीएनजी की नई कीमत तकरीबन 72 रुपए फी किलो हो जाएगी, जबकि एलपीजी की फी किलो कीमत में 22 रुपए का इजाफा कर दिया गया। 1 किलो एलपीजी की कीमत 112 रुपए हो गई। मुल्क भर में 11.8 किलो के घरेलू सिलेंडर्स की नई कीमत 1322 रुपए मुकर्रर की गई है। स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है। असद कैसर की बेटी और बेटे भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। उन्होंने पूरी कौम से दरख्वास्त की है कि वबा से बचने के लिए एहतियात की जाए। स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर के मुताबिक उन्हें 2-3 दिन से बुखार की अलामत थी। पहले भी टेस्ट कराया था जो मनफी आया था। जुमेरात को फिर टेस्ट कराया तो रिपोर्ट मुस्बत आई। उन्होंने खुद को घर में क्वारंटीन किया हुआ है। तबीयत बेहतर है। डॉक्टर्स ने उन्हें घर पर रहने और एहतियात की हिदायत की है। असद कैसर ने पूरी कौम से दुआ की दरख्वास्त की है और कहा है कि लोग वबा से बचने के लिए एहतियात करें। चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी और डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवी वाला ने स्पीकर कौमी असेंबली को टेलीफोन करके खैरियत दरियाफ्त की और जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की। सिंध में आज दोपहर 12 से दोपहर 3:30 बजे तक सख्त लॉकडाउन होगा। सूबाई हुकूमत का कहना है कि 12 से 3:30 बजे तक इस्तिस्ना हासिल कारोबार भी बंद रहेगा। 3 घंटों के दौरान अवाम की नकलो हरकत पर मुकम्मल पाबंदी होगी। गाड़ियों को इस दौरान सड़कों पर नहीं आने दिया जाएगा। सिंध हुकूमत ने शहरियों को हिदायत की है कि वो महकमा दाखिला के SOPs पर मुकम्मल तौर पर अमल करें। जब ये देखा कि कोरोना अमीरों और गरीबों में तमीज नहीं कर रहा तो अशराफिया ने घबराकर लॉकडाउन कर दिया। गरीब दिहाड़ीदारों और मेहनत कशों का न सोचा। 50 इंच के सीने वाला मोदी भी इतना डरपोक निकला कि पूरा मुल्क ही बंद कर दिया। ये कहना है वजीर आजम इमरान खान का। वजीर आजम इमरान खान ने एक बार फिर मुकम्मल लॉकडाउन की मुखालफत कर दी। कहा कि अगर कोरोना की बीमारी से सिर्फ गरीब शिकार होते तो कभी लॉकडाउन करने में इतनी तेजी न दिखाई जाती। लॉकडाउन अनाउंस कर दिया जी, जल्दी से फौरी लॉकडाउन अनाउंस कर दिया। सोचा ही नहीं कि वो बेचारा दिहाड़ीदार, उसका क्या बनेगा। एक एलीट ने फैसला कर लिया सारे मुल्क के लिए, सोचा नहीं किसी का। वजीर तालीम सईद वली ने कहा है तो ऐसे आजम कहते हैं कि लॉकडाउन होगी। जियो के टेक्निकल ऑफिसर डॉक्टर उस्मान सैफ आज पहली किस्त में अली पाकिस्तान में ASP आमना बेग और आयशा सुदीगर मेहमान होंगी। अपनी कामयाबियों के सफर से जियो न्यूज के नाज़रीन को आगाह करें। 15 मई तक